Harshita, had you completed the Coulomb's law, dipole, Gauss theorem? Because the session has started on the 1st March. Anyone, if having the problem in any of the topic, so हम आर्यन राज, मानसी, सर डाइपोल तो हो गया है बट वो गॉसियन वाला गॉसियन थ्योरम गॉस थ्योरम बताया था। गॉस थ्योरम रहती है अभी। ओके, अभी बात करता हूँ मैं और लोगों से भी। आर्यन राज आप बताओ, हर्षिता, मानसी। चल रहा है Anything which you want to revise this time or you want to discuss this Yes, time? sir. Which topic you want to discuss? सर एक बार गॉस थ्योरम रिवाइज करवा दीजिए। गॉस लॉ रिवाइज कराना, गॉस थ्योरम रिवाइज कर लीजिए। गॉस थ्योरम रिवाइज करना। The dipole also. And Dipole. dipole. This is period number 5. तो चलो अभी तो मैं गॉस थ्योरम रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है? एंड टुमारो वी रिवाइज द डायपोल। एनीथिंग एल्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो फ्लक्स का मतलब होता है ना टू फ्लो परपेंडिकुलर। So electric flux is defined as electric field lines which passes perpendicular to the surface। अभी तो सरफेस की बात करिए, सरफेस नहीं एनी, ये क्लोज भी हो सकती है या ओपन भी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ द सरफेस। तो दोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which always pass perpendicular through the surface, then it is known as electric flux। अब मैंने माना मेरे पास में एक सरफेस है like this, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास हो रहे हैं, मान लीजिए these are the field lines which are passing perpendicular, so all these field lines will be considered as flux, these all will be considered as flux, these are all the flux। But when you say that the surface is this and the field lines are passing like at an angle, then what we used to do, we draw a perpendicular on the plane which is directed always outward। So ऐसा नहीं है यहां पर नहीं आएगा, यहां पर भी आएगा, इसको मैं यूनिट वेक्टर n कहता हूं। This is basically known as area vector। Area vector means area defined in any one direction।
किसी भी एक डायरेक्शन में डिफाइन किया गया एरिया वेक्टर कहलाता है। ठीक, तो दोनों में अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट्स प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी एरिया वेक्टर की? नंबर 1, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज मेजर्ड इन परपेंडिकुलर टू प्लेन। और सरफेस, जो सरफेस होगी उस सरफेस के या हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। नंबर 2, ऑलवेज आउटवर्ड, ये हमेशा क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो आप देख सकते हो इन बोथ द कंडीशन दैट दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। हियर यू कैन सी दैट दिस इज द फील्ड लाइन, ये जो है ये फील्ड है, दिस इज द फील्ड। सो इन दिस कंडीशन हाउ मच इज द एंगल थीटा? Got it? So electric flux is represented as phi. Mathematically, if you define, it is also defined as dot product of strength of electric field with area vector. That means this is E dot A. अगर मैं A को area vector मानूं, so this is taken as phi. Here E is strength of electric field and A is area vector. And always remember this area vector A, it is always taken as A unit vector. तो मैं जब भी बनाऊंगा ना तो यूनिट वेक्टर n की हेल्प लेकर चलूंगा। वी आर हैविंग अराउंड 11 पीपल, सोनी, सोहम, सैफ, मानसी, हर्षिता, आयुष, आर्यन, अरीबा, अंशिका, अनन्या। इज दिस क्लियर बेटा? सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यू कैन सी दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा तो ई ए कॉस थीटा। बेसिकली दिस इज E cos theta into A. It means when the field is not passing perpendicular, तो उस कंडीशन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बनाता हूं। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा मेरे लाल, दिस इज E cos theta, और दूसरा कंपोनेंट इधर चला जाएगा E sin theta। मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए? वो कंपोनेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। थीटा एंगल है इसके बीच का, एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर n एंड वेक्टर। am I clear? am I clear? this is the page number 1 of the page number 5। देखो ये मेरे पेज नंबर लिखने का तरीका है 1 5, ठीक है, so that you cannot get confused 2/5। इसीलिए हर पेज पे मेरी डेट मिलेगी आपको, हर पेज पर पेज नंबर होगा, आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस समय कौन सा वाला चीज चलेगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यू सी दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। नंबर 1 दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? SI unit of E is Newton, meter is Newton per coulomb is the strength of electric field, area is meter square. So this is the unit. So you can say Newton meter square per coulomb. This is the unit of it. So this is the electric flux. Anyone is having a doubt on the electric flux, please say. किसी को electric flux में doubt हो? Anyone?
Anyone? चलो कंटिन्यू करूं. Then after you see, you have the gauss theorem. देखो बताते रहना करो, मुझे पता चलता रहेगा. Otherwise मैं कमजोर एक आदमी हूँ, मुझे समझ लगता है कि this is page number 3. ठीक है, gauss law. Now you see gauss law what says? Electric flux passing through any closed surface. So remember, flux can be calculated of any surface, but the electric Gauss law says electric flux of any closed surface is 1 over epsilon naught times to the charge enclosed in the surface. That is phi equal to if this is located in air. Remember, अगर ये होता है if the electric flux, अगर मैं कह देता for any medium, अगर हम किसी मीडियम की बात करते then the statement will be electric flux passing through any closed surface placed in medium. Now you see here you are strictly mentioning placed in medium is 1 over epsilon times to the charge enclosed in surface. Got it? So in this condition you can say phi equal to 1 over epsilon into. If you see, is this clear to all? Please check it. Yes, sir. If you see this epsilon is permittivity of medium. This is permittivity of medium. And this permittivity of medium is epsilon is always taken as K into epsilon naught. K is the dielectric constant. So flux in medium phi, this is 1 over K epsilon naught into Q. Here, Q upon epsilon naught, this you can say flux in free space. So you may represent that this is phi A. So this is, I am giving in the note point. So flux in the medium decreases by K times as compared to when it is in air. Got it? So on changing the medium, electric flux decreases. Any doubt here? Any doubt here? Anyone? Got it? क्यों बच्चों? Yes. Then after you see कि गॉस लॉ का प्रूफ किससे होगा? प्रूफ ऑफ गॉस लॉ ये आपका सीबीएसई का देखो या नीट का देखो, कम से कम एक क्वेश्चन गॉस लॉ पे जरूर मिलता है किसी भी एग्जाम में. तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ. प्रूफ ऑफ गॉस लॉ व्हाट इट सेज कि लेट a charge plus Q is placed
in free space. मान लीजिए चार्ज प्लस क्यू है जिसे फ्री स्पेस में रखा है. टू फाइंड इट्स फ्लक्स, इसका फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए वी एज्यूम, क्यों? क्योंकि बिकॉज गॉस लॉ सेज इट इज ओनली फॉर वैलिड फॉर द क्लोज सरफेस. वी एज्यूम a spherical surface around the charge. So what you say, this is the plus q charge. इसके चारों तरफ मैंने क्या करी, एक सरफेस मान ली. Got it? This surface will be termed as, this is Gaussian surface. ये Gaussian surface है. ठीक, इमेजिनरी सरफेस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात. सिमेट्रिकल होती है अराउंड द गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. इसके दो प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ Gaussian surface. Number one, always encloses a charge. Encloses charge. पहली बात ये, हमेशा ये enclose करेगी चार्ज को. Number two, always symmetrical to given charge distribution. These are the two characteristics of it. These are the two characteristics of it. बच्चों 1 मिनट, स्कूल से फोन आ रहा है प्रिंसिपल सर का. So this is the Gaussian surface. आप देख सकते हो Gaussian surface. अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये पॉइंट चार्ज है, तो इससे रिलीज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये होगा. दिस इज, और इसके ऊपर अगर मैं एक छोटा सा सरफेस इमेजिन करूं तो मुझे पूरी सरफेस पे बात करनी है. देखो गॉस थ्योरम कहता है कंप्लीट क्लोज सरफेस होनी चाहिए, लेकिन फ्लक्स किसी भी सरफेस पे कैलकुलेट कर सकते हो. तो इसीलिए फ्लक्स आपने क्या करा ना, छोटा सा सरफेस बनाया कोई भी. तो मैंने वैसा ही एक छोटा सा स्मॉल सरफेस कहां लिया, मैंने छोटा सा स्मॉल सरफेस लिया सर यहाँ पर. अब हम इस पर एरिया वेक्टर बनाएंगे. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. अगर ये एरिया वेक्टर देखा जाए तो इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड हियर direction of E and direction of N are parallel. So अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, so d phi which you say E into A, गौर से देखना, E into A, because here you are saying this is a small surface area dA, so this is E,
dot dA unit vector n. Am I clear? dA is area of a small part on Gaussian surface. Is this clear to all? Is this clear? Anshika? Yes, sir. अनन्या, सोनी, अब अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बनाऊंगा तो ई डी ए cos 0, दिस इज डिफाइंड, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज ई. अब अगर मुझे इंटीग्रेशन फॉर द होल सरफेस जाना है तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए, ये बन जाएगा बेटा लाल फाई, दिस इज ई, और ये कहलाएगा, इसकी रेडियस अगर आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर. बट ई का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक, so you can see that the 4 pi is cancelled here, r square is cancelled here, so your result is q upon epsilon naught. This is the electric flux. Very important theorem. Got it? If anyone has to revise once, please go through that the electric flux is given by phi equal to 1 over epsilon naught. Okay, this is the theorem. Now we are verifying it. So for the verification of it, we assume that there is a spherical Gaussian surface around a charge. एक चार्ज के चारों तरफ मैंने spherical Gaussian surface में ये चार्ज है. क्लियर? अब ये spherical Gaussian surface, the radius of the Gaussian surface is r. ठीक है? मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. उसमें एक छोटा सा पार्ट एज्यूम किया मैंने, देयर इज द स्मॉल पार्ट. ठीक है, ये बिल्कुल वैसा है ना जैसे फुटबॉल पे लगे हुए पैचेस. अब मान लीजिए कि फुटबॉल के सेंटर पर एक बल्ब रखा था एलईडी, और उसने अपनी लाइट रिलीज कर, तो वो लाइट उस फुटबॉल के पैच में से ना रेडियली आउटवर्ड जा रही है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द, this is the direction of the unit vector, and both are parallel, so theta is 0. Got it? Is this clear to all? May I? Yes, sir. Now you see the proof of Coulomb's law on the basis of proof of the Coulomb's law on the basis of Gauss theorem. On the basis of the Gauss theorem. Coulomb's law is verified only for the two charges. So let us consider there are two positive charges plus q1 and plus q2. Placed at distance r. Placed at distance r. तो मान लीजिए कि that this is the one charge plus q1, और इसके थोड़ी दूरी पर दूसरा चार्ज रखा है q2, distance between them is r. Clear? We assume a Gaussian surface
around the charge q1 of radius r. हमने क्या करा, चार्ज q1 के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस मांगी जिसकी रेडियस खुद की भी r है, यानी कि वो कुछ ऐसे है. This will be the gaussian surface. I hope the message is clear. तो जो डिस्टेंस थी ना, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वही डिस्टेंस की मैंने क्या कर ली, गॉसियन सरफेस मान. अब क्या होगा, जरा गौर से देखें, प्लस q1 के ड्यू टू बनने वाला फील्ड, द फील्ड ड्यू टू प्लस q1, ये जो होगा सर, ये यहां से रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा. इस जगह पर छोटी सी सरफेस एज्यूम करेंगे, उस पर एरिया वेक्टर लेंगे. एरिया वेक्टर हो गया है. अगर गौर से देखें तो ई और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे. ठीक है, तो मैंने क्या कहा, गॉसियन सरफेस अराउंड द चार्ज q1 ऑफ द रेडियस r. ठीक है, इससे क्या मतलब निकलेगा, सो दैट चार्ज प्लस q2 lies on Gaussian surface. ये Gaussian surface पे लाई कर रहा है, तो d phi equal to e dA, unit vector है. This will be taken as e dA cos 0. This is e dA is 4 pi. अगर मैं सॉरी पहले क्लोज इंटीग्रल पुट करते हैं, this is d phi for the whole surface, this is closed integral of d. This will be phi. E जो होता है strength of electric field, if you remember, F upon Q naught होता है. कौन सा Q naught, जो आप चार्ज लेकर आए, किसमें लेकर आए, Q1 की फील्ड. तो Q1 की फील्ड में क्या लेकर आए, आप Q2 लेके आए. So this will be F upon Q. This will be 4 pi r square. Any doubt, anyone? Any doubt, anyone? This phi, अब phi केवल उसके लिए होता है जो चार्ज इंक्लोज हो रहा है. So this is Q1 over epsilon naught equal to F upon Q2 into 4 pi r square. So if I shuffle the terms, so F equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over r square. You can see that this is your Coulomb's law, which you verified on the basis of the Gauss theorem. Is this clear to all? Is this clear to all? Anyone is having the doubt regarding this? Anyone? Anyone? Soni, Soham, Mansi, Ayush, Aryan, Ariba, Anshika, Ananya. Anyone is having any doubt regarding this topic? No, ये समझ में आ गया? क्यों बच्चों? कंटिन्यू करो. Yes, sir. yes, sir. Then after you see, strength of electric field due to long wire. ये जो long होता है ना, this is infinite long. So suppose that there is a long wire which is having a positive charge uniformly distributed. Let a charge plus Q is
uniformly distributed on whole length of the wire. So, line charge density of the wire lambda equal to q upon dq upon dl या फिर q upon, क्लियर? अब यू सी दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है ना वो रेडियली आउटवर्ड जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी चार्जेस हैं तो फील्ड लाइंस ऐसे करके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि दो पॉजिटिव के बीच में, इफ यू रिमेंबर, दो पॉजिटिव होते हैं तो इनके बीच में एक नल पॉइंट बन पाएंगे, तो इसका जो फील्ड होगा वो नीचे नहीं आ सकता, इसका फील्ड ऊपर नहीं आ सकता, तो ये जो होंगे ना ये फील्ड कुछ ऐसे बने। और मैं हर एक का सर्कल अगर बना लूं तो इसका सर्कल ये आएगा, इट्स सर्कल विल बी लाइक दिस। यहीं पे अगर मैं थर्ड लेकर चलूं, मान लीजिए यहां कहीं पर, अब इनफाइनाइट लॉ है तो पूरे में ही ऐसे सर्कल बनेंगे। Now you can see if you combine all these circles, so you will be getting a circular surface around it. This is cylindrical Gaussian surface. This is cylindrical Gaussian surface. Okay, so this is cylindrical Gaussian surface. तो cylindrical Gaussian surface means जो इसके चारों तरफ कवर करा, तो मान लीजिए जैसे ये पेन है, पेन के अंदर रिफिल है, रिफिल के चारों तरफ इस सरफेस, तो पेन जो हो गया ना और रिफिल के लिए Gaussian surface हो गया। Got it? अब अगर मैं इसके डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए दिस इज द वायर which is having the positive charge uniformly. Gaussian surface इसके चारों तरफ कुछ ऐसी आ गई, this is the Gaussian surface, small. You can see this is the direction of the E. Field is radially outward, आप चेक कर सकते हैं। कहाँ मेजर करने जा रहे हो? स्मॉल r डिस्टेंस पर, ठीक है। मान लीजिए दिस इज द लेंथ ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर, दिस इज द Gaussian surface। अब अगर मैं इसके ऊपर Gaussian surface इमेजिन करूं, छोटे छोटे surface, सॉरी, तो one surface will be taken here, another will be taken here, because the discontinuity of the surface is at the three places. So one area vector will be taken as here and one, second area vector will be taken here and two, and third area vector will be taken here and two. Am I clear? You can see that this electric field, this is E everywhere. So there are the three area vectors. क्यों? क्योंकि इसके तीन सरफेस बनेंगे, 1 2 3, जिनमें डिसकंटिन्यूटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो d phi इक्वल टू E dA यूनिट वेक्टर n1 प्लस E dA यूनिट वेक्टर n2 प्लस E dA यूनिट वेक्टर n3. Got it? Is this clear? Here you can see d phi E dA cos 0 plus E dA cos 90 plus E dA E dA cos 90. You can see here and here n2 or n3 per angle 90 degrees, so these two terms will vanish here. So d phi will be
ईडी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं क्लोज के लिए तो ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी। सो दिस विल बी 5, दिस इज ई, और क्लोज इंटीग्रल सिलेंडर है तो 2 पाई आर। इसको हम कहते हैं पाई को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इनटू 2 पाई आर। इज दिस क्लियर टू ऑल? सो ई विल बी q over 2 pi epsilon naught r into 3. You can check. ठीक, तो E यहां पर q upon L can be taken as lambda, तो 2 pi epsilon naught into r. अंशिका बात समझ में आई? अंशिका? Yes, sir. अनन्या? Yes, sir. अरीबा? Yes, sir. आर्यन राज? Yes, sir. आयुष पटेल? आयुष पटेल? मानसी? सोहम? Yes, sir. सोनी? सोनी शर्मा? तो इज दिस क्लियर टू ऑल? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। एनीवन? अब अगर आप देखें ना तो एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इट इज लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फॉर ए लॉन्ग वायर you see E inverse of the square of the distance. This is for a point charge. E inverse of a cube of the distance for electric dipole. You can see the field dependency changes according to given charge system. Is this clear? तो आप ना हर जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर को नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हर एक के लिए फील्ड क्या है? अलग रहेगा। Is this clear to? Is this clear to all? ठीक है, आप देखो पीरियड ओवर होने वाला है तो इसलिए मैं इसे यहीं पे ऑफ करता हूँ। ठीक है, रेस्ट में डिस्कस टुमारो।